Hello everyone, welcome to my channel. Today we are studying chapter number 13, Why Do We Fall Ill, part 3. And हम जितने भी chapters है उसकी part में video बना रहे हैं. If you are interested in other parts, you can check to my channel. Immunity system के बारे में एक video है which is very interesting and useful. You can check it out. और आज का जो टॉपिक है कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़. ठीक है, तो हमने पहले डिफेंस सिस्टम पढ़ लिया कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करे, कैसे डिफेंस करती है. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट डिसीज़, किस तरह से हमारी बॉडी जो है फंक्शन कर रही है, किस तरह से जो डिसीज़ है हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिसीज़? A disease is a condition that deteriorates the normal functioning of the cells, tissue and organs. ठीक है, तो डिसीज़ क्या होता है? एक जो नॉर्मल एंटिटी होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें किसी भी तरह का डिटोरेशन, किसी भी तरह का एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाए जिसकी वजह से सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है ठीक से काम ना कर पाए जैसे वो काम करने चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अफेक्टेड पर्सन और डिसीज़ कॉज्ड पर्सन. व्हेन अ पर्सन इज़ इन्फ्लिक्टेड विद द डिसीज़, he exhibits a few symptoms and signs that ranges फ्रॉम नॉर्मल टू सीवियर डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन. ठीक है, जब भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें किसी भी तरह की डिसीज़ एंटर होती है, उसे होती है, सो इट शोज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स और साइंस. हमें किसी को अगर बुखार है, फीवर है, उसे देख के पता चल जाता है दैट दिस पर्सन हैव दिस थिंग्स. उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, वो एक नेचर इस तरह का बताता है. Hence, in order to identify different diseases, the normalcy an entity needs to study and understood as clear demarcation between disease and disease free is not always apparent. ठीक है, तो उसके लिए एक properly study की जाती है to identify this is a disease and this person is disease free. So we will study about different diseases. There are two types of disease: infectious disease and non-infectious disease. So mainly हमें word से ही पता चल रहा है that what is an infectious disease, that if a person can pass on their own disease is called as infectious disease. कि हमें कोई चीज़ हुई, हमें खांसी हुई है एंड वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है. मेरे खांसने से मे बी मेरे बाजू में जो इंसान बैठा हुआ है उसे भी हो सकता है. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब है दैट वी कैन नॉट पास ऑन दैट डिसीज़. वो चीज़ हमारी बॉडी की कमी की वजह से अंदर से वो डिसीज़ हुई है. ठीक है, नाउ disease that spreads from one person to another are called as communicable disease. They are usually caused by microorganisms called pathogens, fungi, bacteria, virus, protozoans, worms. When an infected person discharges fluid, pathogens may exit the host and infect a new person. Sneezing, coughing, etc. Example include cholera, chickenpox, malaria, etc. ठीक है, तो जब भी हम पास कर सकते हैं डिसीज़ बाय कॉफिंग, स्नीजिंग, जो फ्लूइड रिलीज़ होता है, मे बी दे माइट यूज़ इट टू गेट टू अनदर पर्सन. तो कुछ डिसीज़ है वो है कॉलेरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया. ये जो पेशेंट है चिकन पॉक्स वो फैलने से बढ़ता है, सभी को एक बार होता ही है बचपन में. सो दे आर द स्मॉल रेड स्पॉट्स विच वी गेट ऑल ओवर आवर बॉडी. Now next is non-infectious disease. These diseases are caused by pathogens, but other factors such as age, nutritional deficiency, gender or an individual and lifestyle also influence the disease. ठीक है, तो ये किसी इंसान को हो सकता है बट मेनली उसका कारण वो खुद हो सकते हैं, देयर इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, देयर जेंडर, उनकी एज, या फिर एग्जाम्पल इंक्लूड्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेनली हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती है. लाइक जो डायबिटीज़ है, दैट अवर बॉडी पार्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट वॉकिंग इनफ, जिसकी वजह से जो शुगर है इट इज़ नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड, अवर ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग. तो मेनली ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है. टेंशन का मतलब है दैट अ पर्सन ब्लड प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंटली गोइंग अप एंड डाउन. So these are several reasons.
कैंसर वो हमारे बॉडी के जो सेल्स है दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ इन एन अनयूजुअल वे एंड कैन बी अनस्टॉपेबल. They do not spread to other, but they restrain within a person who has contracted them. Alzheimer's, asthma, cataract, heart diseases and other non-infectious diseases. ठीक है, अल्जाइमर है या फिर हाइपरटेंशन है, दिस आर द डिसीज विच कैन नॉट बी स्प्रेड विथ अ टच और फ्लूइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज degenerative disease. They are mainly caused by malfunctioning of vital organs in the body due to deterioration of the cell over time. Disease such as osteoporosis shows characteristic of degenerative disease in the form of increased bone weakness. ठीक है. So osteoporosis is a type of disease where our bone density decreases. हमारी bone जो है वो बहुत soft हो जाती है, weak हो जाती है because of lack of calcium. ठीक है. They increase the risk of bone fracturing. ठीक है. हमारी bone weak है, हमें थोड़ी सी भी चोट लगेगी, our bone can be crack और break out. ठीक है. तो हमारी bones जो है वो immensely weak हो जाती है. When degeneration happens to the cell of a central nervous system such as nervous, the condition is termed as neurodegenerative disorder. Alzheimer is a prominent example of this disorder. Degenerative disease are usually caused by aging and body wear. Others are caused by lifestyle choice and some are hereditary. ठीक है. तो अल्जाइमर्स में हमारी जो नॉर्मल ब्रेन साइज है इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. So it is one very good example. Maybe it can be depend on lifestyle we are choosing, how much we are taking care of our body, how much we are exercising, walking, eating proper diet. ठीक है. Now next is our allergies. You have always heard people telling about they are allergic to nuts, they are allergic to some fruits, veggies, anything. ठीक है. So allergy is that our body is not accepting that type of food in our body. An allergic reaction arises when the body becomes hypersensitive to certain foreign substance called as allergens. ठीक है. So हमारी body hypersensitive हो जाती है उस चीज़ों से, उन चीज़ों को allergens कहते हैं. This usually happens when the immune system reacts abnormally to any seemingly harmless substance. ठीक है. जो चीज़ें दूसरों को may be ना affect करे, like if I am okay with eating almonds, it's not given anywhere that my brother won't be allergic to it. ठीक है. उसको मे बी आलमंड से हार्म हो सकता है if it's his body is not accepting almonds. ठीक है. So common allergens includes dust, pollen, animal dander, mites, feathers, latex and also certain food products like nuts and gluten. ठीक है. तो mostly people who are affected by allergens are like latex or food products like gluten or nuts. ठीक है. pollen, dust, animal products of certain kinds. Peanuts and other nuts have capability to cause severe allergic reaction. They may induce life-threatening condition such as difficulty in breathing, tissue swelling and blocking the airways and anaphylactic shocks. ठीक है. So maybe sometimes peanuts and other nuts can provoke a person's body to a certain level कि उनकी जो टिश्यूज़ है वो काम करना बंद कर दे. इट गेट स्वोलन, उनका जो रेस्पिरेटरी पाथ है वो ब्लॉक हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, गिव अ लिटिल बिट ऑफ शॉक्स. ठीक है. सो मे बी पीपल कैन रिएक्ट टू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली. Other common and less life-threatening symptoms includes cough, sneezing, running nose, itchy and red eyes, skin rashes. One of the best example of allergic reaction is asthma. Sometimes bee stings and ant bites also trigger allergies. Consumptions of shellfish and certain medication can induce allergic reaction. Asthma is a chronic disease mainly affect a bronchi and bronchioles of the lungs.
One of the factors responsible for this is airborne allergens such as pollen or dust. Symptoms includes difficulty in breathing, wheezing, and coughing. Now, next is deficiency disease. They occur due to deficiencies of hormones, mineral, nutritions and vitamin. ठीक है. So deficiency disease जो है वो mainly हमारी body में किसी तरह की कमी हो, like we do not have proper minerals, nutritions, vitamins, because of which, like because of calcium, our bone gets weak. So such like that, if our body is not getting proper hormones, minerals, so it might be disease for it. For example, diabetes occurs due to inability to produce यूटिलाइज इंसुलिन. ठीक है, हमारी बॉडी ठीक से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर सकती. Goiter is mainly caused by iodine deficiency. Kwashiorkor is caused due to lack of protein in our diet. Vitamin B1 deficiency caused by beriberi. Next is goiter. It is one type of disease. It is an abnormal enlargement of thyroid gland by blocking the esophagus or other organs of chest and neck. This causes difficulty in breathing and eating. ठीक है, so maybe जो goiter है वो हमारा जो esophagus है, वो food pipe है, उसे block कर सकती है. It may cause difficulty in breathing and eating. Next is blood disease. Blood contains plasma, white blood cells, platelets, and red blood cells. When any of these components are affected, it can lead to blood disorder. For instance, the red blood cells are destroyed when a person contracts the sickle cell disease. These red blood cells are destroyed into the shape of sickle, hence name, and it loses its ability to carry oxygen. ठीक है, so जो सबसे ज़्यादा लोगों में डिसीज़ है ऑफ ब्लड इज़ सिकल सेल अनीमिया. उसमें जो हमारे सेल्स है, जो राउंड सेल्स है, वो खुद को एक सिकल टाइप में चेंज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे लूजेस द एबिलिटी टू पास ऑक्सीजन. So consequently, this disease is characterized by symptoms similar to chronic anemia, such as shortness or breath and tenderness. Other diseases such as eosinophilic disease, leukemia, myeloma, cancer of plasma cells in bone marrow, sickle cell anemia, apoplastic anemia, hemochromatosis, and von Miller and disease, blood clotting disorder fall under this classification. Generally, symptoms are pale skin, swelling lymph nodes, fever, bleeding, brushing, skin rash. So over here, as you can see, the right picture is about a person with a high iron. So you can see the difference between the hands because of more iron. Thank you. Please like and subscribe to my channel.